Good morning to everyone. This is the sum we will do. You can see in your screen. Past journal entries in the books of N of Nasik based on AS 11, Accounting Standard 11. Now, we have to pass journal entries in the books of N of Nasik, and Accounting Standard 11 is based on foreign transactions. So let us read the question ahead. A machine was imported. So imported means purchased from outside the country. What was purchased? Machinery. What was the date? On 20th January 2013 from Jackie Chan of China for $2 lakh. So it was purchased. Machinery was purchased on 20 January from Jackie Chan of China, to whom we will have to pay money in the future. And the amount what has to be paid is $2 lakh. Now we have to, because the business is in India, the reporting currency is rupees. We will have to convert this dollars into rupees. And the payment for the same was made as follows. $1,50,000 ka payment we have made on 27 Feb 2013. Purchase imported on 20th January. Made the payment on 2 dates. One is on 27th February and the second date is on 15th March. 27th February and 15th March. The exchange rate for $1 was as follows. 20th January 2013, $1 is equal to 47. जिस दिन परचेज किया उस दिन $1 was equal to 47. So we will have to pay 47 rupees equal to $1. So multiply by 2 lakh, we will get the amount that has to be paid. On 27 February, we made payment of $1,50,000 and exchange rate is 46.50. Means exchange rate has reduced from 47 to 46.70. Sorry, 46.50. 50 पैसा कम हुआ तो हम कम पेमेंट करेंगे, कम पैसा बाहर जाएगा. So tell me, is it a profit or a loss? It's a profit. So FPF will be in the credit because FPF is a nominal account. Loss होता है तो डेबिट, प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट द FPF अकाउंट. देन हमने फाइनल पेमेंट किया $50,000 का on 15th March 2013 when exchange rate is 48 rupees. Exchange rate is, तो what, जब हमने import किया था exchange rate was 47. Now we are making the final payment of $50,000 on 15th March. Exchange rate is 48. Means $1 more. 47 से 48 पे करना पड़ेगा. So it will be a loss. So a loss होता है तो FPF will be in the debit. So FPF will be in the debit. We will pay, pass the entry. And see, year end है financial year. Calendar year end is 31st December and financial year end is 31st March. 31st March से पहले, that is 15th March तक सारा पेमेंट करते हैं.
तो 31 मार्च को कोई भी बैलेंस नहीं है पे करने के लिए, सो नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो नथिंग हैज टू बी पेड। बट ईयर एंड में हम एफईएफ का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सो वी विल प्रिपेयर एफईएफ अकाउंट एंड जो भी बैलेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ट्रांसफर ऑफ द एफईएफ बैलेंस to the profit and loss account. FEF full form is foreign exchange fluctuation account. So this is the question. We will have to solve it. So first transaction कभी हुआ, हमने import of the machinery कभी किया? The machinery was imported on 20th January 2013 to Jackie Chan of China. So हम कौन से डेट में जाएंगे? 2013 Jan 20th को we have imported machinery. Machinery purchase किया, so what will come? Machinery purchase किया, so what will come? Machinery is a asset. जब हम goods खरीदते हैं तो हम purchase account बोलते हैं, but तुम्हें 11th standard याद रहेगा, जब हम गुड्स परचेस या सेल करते तो परचेस करते तो परचेस, सेल करते तो सेल्स, बट जब हम मशीनरी खरीदते हैं तो हम असेट खरीद रहे, असेट कम्स इन, सो इट विल नॉट बी परचेस अकाउंट, इट विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज वी हैव परचेज द मशीनरी। हमने क्या परचेस किया? मशीनरी, एंड मशीनरी इज अ असेट। असेट है तो हम वो असेट को डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट इज कमिंग इन, असेट इज अ रियल अकाउंट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम असेट को डेबिट करते हैं। एनी कंफ्यूजन हियर? जब हम कुछ भी रॉ मटेरियल या गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो हम इंपोर्ट परचेज बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट बोलेंगे, बट व्हेन वी आर परचेसिंग अ असेट, व्हेन वी आर इंपोर्टिंग अ असेट, व्हाट कम्स इन बिजनेस? जब हम असेट इंपोर्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या आता है? असेट आता है, मशीनरी आया है बिजनेस में, सो ये असेट साइड में बैलेंस शीट में भी लिखना है। सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, व्हेनेवर इट इज अ परचेस ऑफ अ असेट वी डेबिट द असेट, वी डेबिट द असेट, मतलब असेट हैज कम इनसाइड द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो मशीनरी कितने का? हाउ मच डॉलर? $2 lakh का है। And what is the exchange rate on 20 January? It is 47 rupees. So I want all of you to multiply, okay, multiply 2 lakh into 47. You will get 94 lakhs. We will write 94 lakhs. एंड ये किसको किससे इंपोर्ट किया है? तो इट इज जैकी चैन ऑफ चाइना, so we will write down Jackie Chan of China account, we will write to Jackie Chan of China account, Jackie Chan of China account 94 lakhs में we have made the purchase, 94 lakhs में we have made the purchase. So being machinery purchased या being machinery imported at exchange rate REX dot RT मतलब exchange rate. What is exchange rate? $1 equal to rupees 47. This was the exchange rate when we imported the machinery. So first entry is done. Now next हमने payment किया है. What is the next payment entry? 27th February को हमने again what we have done? Payment import हो गया. Not again but for the first time. 27th February को we are making the first installment. We are paying the first installment of
50,000 US dollar. So let us note the date. What is the date? 27th of February. So I write February 27th. तो हम पेमेंट करेंगे तो what will go out? Cash will go out and who will receive the money? किससे खरीदा हमने? जैकी चैन ऑफ चाइना से. तो जैकी चैन ऑफ चाइना अकाउंट डेबिट to what is going out? Cash bank account. What is the exchange rate? कितना डॉलर है? It is $1,50,000 into 46.50. इतना पैसा बाहर जाएगा because exchange rate on 27th February is 46.50. So 1,50,000 into, yes, 69,75,000. Correct answer. But हमने क्या सोचा था? हम कितना रेट के हिसाब से we will be making the payment? 1,50,000 into जिस दिन we have imported, जिस दिन हमने मशीनरी इंपोर्ट किया उस दिन एक्सचेंज रेट था 47. So it is 70,50,000. 70,50,000. So we can see that the credit is amount is less. मतलब हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम पैसा दिया तो कम पैसा बाहर गया. So it's a profit. That profit we will call as FEF account, that is foreign exchange fluctuation account. $1,50,000 into 0.50 का profit. 0.50 का profit is coming to 25,000. No, it is how much? 75,000. It is 75,000. This is done. Entry is done. Now narration being a payment on import of machinery made and profit. What is happening? Profit on exchange rate fluctuation recorded. Profit on exchange rate fluctuation recorded. This is done. Now final payment हमने कब किया? Next payment was made on 15th March. कितना अमाउंट का पेमेंट किया? $50,000 का पेमेंट किया. And what is the exchange rate on 15th March? Exchange rate is 48 rupees. $1 equal to rupees 48. Means हमने सोचा था 47 पे करना है जब इंपोर्ट किया था. But exchange rate is $1 equal to 48. ज़्यादा है, means it's a loss. So again, let us make the entry. The date is March 15th. Date is March 15th. And again हम payment किसको करेंगे? Jackie Chan of China. And what will go out? Cash bank account debit and dollar how much? $50,000. And what is the exchange rate? 48 rupees. Exchange rate is 48 rupees. So see how much it is coming. It is coming to 24 lakhs. But हमने क्या सोचा था किसके हिसाब से देंगे? हमने सोचा था that we will be making payment as per $47. Sorry, 47 नहीं. $1 is equal to 47. तो हमने सोचा था कि हम किसके हिसाब से देंगे? $1 is equal to 47
which is 23,50,000. So there is a loss. Loss होगा तो FEF account which is a nominal account, loss होता है तो debit होता है, profit होता है तो credit. So into 1 है. So how much it is? 50,000. So this entry is also done. Now what we will do the narration being payment on import of machinery made and यहाँ पे क्या हो रहा है, loss on exchange rate fluctuation recorded. Loss on exchange rate fluctuation recorded. Now finally what we will do, year end दिया है. What is the year end? 31st March. Year end क्या follow करता है? Financial year as the accounting year. The financial year ends on 31st March. Financial year March 31st को end होता है. Financial year ends on March 31st. So go, we will prep. और यहाँ पे notional profit, notional loss नहीं आएगा because year end तक पूरा $2 lakh का payment is completed. Notional profit या notional loss incomplete transactions पे आता है. जो year end में भी अगर कोई पे करना बाकी होगा तो ही this notional profit or notional loss will come into picture. Now notional loss, notional profit will not come, but FEF account has to be closed. No, हम सारे notional this is a what FEF is a nominal account and हर account को हम year end में close करते, be it a nominal account or any other account. But nominal account का speciality है उसका closing balance नहीं होता तो उसको हम profit and loss account में transfer करेंगे. So let us see first entry में FEF है. Is there FEF in the first entry? Second entry में it is there in the credit side 75,000. तो February 27th 2013 27th February हम क्या लिखेंगे? 22 से स्टार्ट होता है ना क्रेडिट साइड, 22 से स्टार्ट होता है. एंड व्हाट इज द ऑपोजिट अकाउंट? FEF के ऑपोजिट में क्या है? जैकी चैन ऑफ चाइना. अमाउंट कितना है FEF का? 75,000. So I will write here 75,000. क्रेडिट साइड में लिखा अमाउंट भी क्रेडिट का, बट नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट. नाउ अगेन गो टू द नेक्स्ट एंट्री. March 15, FEF is in the debit. FEF is in the debit 50,000. Name of the opposite account which is cash bank. So हम क्या लिखेंगे? Debit on the debit side 15th March. Year कितना है? Year is 2013. So I will write 2013. I will write, take it in the beginning, and here we will write debit side starts with 2, name of the opposite account cash bank account, and amount is FEF का amount है 50,000. FEF का amount है 50,000. Now which side is heavy? Credit heavy मतलब profit ज्यादा है. Nominal account का debit side मतलब expense ज्यादा, credit side मतलब income ज्यादा. So credit is heavy means signifies income is more. Income is more. How much balance? 25,000. And year end में, year end is March 31st. तो हम क्या लिखेंगे? कहाँ जाएगा ये amount? This amount will go to the profit and loss account. To P&L या profit and loss account. This is the balancing figure. Now what we will do?
दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ना लेजर से जर्नल में जाना है, तो एफईएफ अगर डेबिट साइड में बैलेंस है, एफईएफ का डेबिट साइड में बैलेंस है, तो एफईएफ विल बी इन द डेबिट। तो एंट्री में क्या होगा, एफईएफ विल बी इन द डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट, बिकॉज एफईएफ अकाउंट के डेबिट साइड में है। अगर एफईएफ अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस होता तो एफईएफ क्रेडिट में आता। नेम ऑफ द ऑपोजिट अकाउंट, ऑपोजिट अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So we will write profit and loss account. What is the amount? Balance amount क्या है, 25,000, 25,000 being balance transferred, being balance transferred, being balance transfer भी लिख सकते हैं, या being balance of FPF account transferred. So this, with this sum comes to an end. Thank you very much everyone.